ओके हाय एवरीवन। सो आज हम HCV का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। इट सेज टू पैरेलल वायर्स carry equal currents of 10 ampere along the same direction and are separated by a distance of 2 centimeter. Find the magnetic field at a point which is 2 centimeter away from each of these wires. सो देखो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास दो पैरेलल लॉन्ग वायर्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं। सो लेट्स से इस तरह से हम दो वायर्स ले लेते हैं जो कि डॉट डायरेक्शन में करंट को कैरी करते हैं। दीज आर द टू पैरेलल लॉन्ग वायर्स जो कि डॉट डायरेक्शन में करंट कैरी करते हैं सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स इज 2 सेंटीमीटर एंड जो करंट की वैल्यू है दोनों ही वायर्स के लिए दैट इज सेम विच इज 10 एम्पेयर ना। एंड वी हैव टू टेक अ पॉइंट सच दैट जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द टू वायर्स दैट इज सेम. So what I will do, I will draw a line connecting the two wires and look at the perpendicular bisector of this line which is connecting the two wire. ये इसका perpendicular bisector है. What is the property of this perpendicular bisector? If you take any point on this perpendicular bisector, उस point का जो distance होगा from the two wires that will be same. So I am taking a point P on this perpendicular bisector such that जो point P है उसका जो distance है from both the wires that is same which is 2 centimeter ना. So आप देखो इस तरह से this distance is 2 centimeter and this distance is also 2 centimeter. So what you are getting is actually a right angle sorry equilateral triangle है ना. यहाँ पे हमारे पास एक equilateral triangle बन रहा है जिसकी each side is 2 centimeter. So we can say this angle is 60 degree, this angle is also 60 degree and ये जो total angle है that is 60. So we can say this angle is 30 and this angle is also 30. Now point P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. सो व्हाट वी कैन डू, एक काम करते हैं, ये जो वायर्स हैं इनको हम नेम कर देते हैं. दिस इज माय फर्स्ट वायर and this is my second wire. So we can find the magnetic field at point P because of the first wire and second wire separately and then we can take the vector sum. So पहले हम बात करते हैं B1 की. What is B1? B1 is the magnetic field at point P because of the first wire. So अब देखो जो डायरेक्शन होगा B1 का यूजिंग राइट हैंड थंब रूल यू कैन फाइंड इट एंड जो B1 होगा ना वो इस ब्लू लाइन इस येलो लाइन के परपेंडिकुलर होगा. ये जो येलो लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ इस येलो लाइन के परपेंडिकुलर होगा B1 एंड यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल यू कैन चेक द डायरेक्शन. इस तरह से आ रहा है. दिस इज माय B1 such that this B1 is perpendicular to the yellow line. Can you find the magnitude of V1? That is mu naught I upon 2 pi A. So अब देखो mu naught, what is the value of I? I is 10 ampere divided by 2 pi, what is A? That is the perpendicular distance of the point from the wire which is 2 centimeter. So 2 into 10 power minus 2 meter. So this value is mu naught upon 4 pi into 10 power 3. So mu naught by 4 pi is 10 power minus 7. 10 power minus 7 into 10 power 3. That will become 10 power minus 4 Tesla. Right? This is the magnitude of B1 which is 10 power minus 4 Tesla. Now let's talk about B2. What is B2? B2 is the magnetic field at point P because of the second wire. So आप देखो जो डायरेक्शन होगा B2 का at the point P that will be perpendicular to this blue line जो कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. ये जो ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ की है इस ब्लू लाइन के परपेंडिकुलर होगा. और हाउ टू चेक द डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल. सो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल जो डायरेक्शन आ रहा है B2 का पॉइंट P पे दैट इज लाइक दिस such that this B2 is perpendicular to this blue line which I have drawn. Right? Now B2 का जो मैग्नीट्यूड होगा the magnitude of B2 is also 10 power minus 4 Tesla. Why? Because जो करंट है वो भी सेम है which is 10 ampere and जो डिस्टेंस है पॉइंट P का that is also same which is 2 centimeter. So जो मैग्नीट्यूड होगा B2 का that is also 10 power minus 4 Tesla.
नाउ जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P पे, दैट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ B1 एंड B2. नाउ B1 और B2 का अगर आपको वेक्टर सम लेना है देन आपको B1 और B2 के बीच का एंगल पता होना चाहिए. कैन यू फाइंड दिस एंगल? आप देखो काफी सिंपल है. This angle is 30, this angle is 30, so this angle is also 30. How do I know that? Because जो B2 है वो इस blue line के perpendicular है ना, so the angle between B2 and this blue line is 90. So 30 30 and this should also be 30. Now आप देखो कि ये जो B1 है ये इस yellow line के perpendicular है. So if I say this angle is 30, it means this angle should be 60 degree. Why? Because B1 is perpendicular to this yellow line. So if this angle is 30, this angle should be 60. So what is the angle between B1 and B2? That is 60 degree. So the situation is like you have B1 here and you have B2 here, and the angle between them is 60 degree, and the magnitude of B1 and B2 is same, which is 10 power minus 4 Tesla. So net magnetic field is nothing but under root of B1 square plus B2 square plus 2 B1 B2 cos theta. Theta is the angle between them. Just substitute the values under root of B1 square, which is 10 power minus 4 whole square, plus B2 is also 10 power minus 4 whole square, plus 2 10 power minus 4 to 10 power minus 4 into cos 60, which is 1 by 2. If you simplify this, 10 power minus 4 is out. What is left is 1 plus 1 plus 2 into 1 by 2. It will become root 3. So root 3 into 10 power minus 4 Tesla. Or you can say 1.732 into 10 power minus 4 Tesla. This is the net magnetic field at point P. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.